हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मा क्वेश्चन आंसर की चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक ड्रग्स 100 MCQs, ए कंप्लीट सेट ऑफ 100 फार्माकोलॉजी MCQs ऑन डायबिटिक ड्रग्स suitable फॉर ESI फार्मासिस्ट, OSSC फार्मासिस्ट, DSSSB फार्मासिस्ट, एम्स, NHM, GPAT, D Pharma and B Pharma exam preparations. So let's start. Question number 1. Which drug is the first line treatment for type 2 diabetes mellitus? A. Glibenclamide, B. Metformin, C. Insulin, D. Pioglitazone. इसका सही आंसर होता है B. Metformin. एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। Metformin is the first choice of drug because it reduces hepatic glucose production and improves insulin sensitivity without causing weight gain. Question number 2. Metformin belongs to which class of anti-diabetic drug? A. Sulfonylurea, B. biguanide, C. DPP-4 inhibitor, D. SGLT2 inhibitors. इसका सही आंसर होता है बाइग्वानाइड्स। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। मेटफॉर्मिन इज द ओनली बाइग्वानाइड currently used in clinical practices. Question number 3. Which drugs stimulate insulin release from pancreatic beta cells? A. Metformin, B. Glimepiride, C. Acraboz, D. Empagliflozin, D. Empagliflozin. इसका सही आंसर होता है ग्लिमिप्राइड। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ग्लिमिप्राइड इज ए सल्फोनाइल यूरिया दैट इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4. Which anti-diabetic drug commonly causes hypoglycemia? Metformin, glibenclamide, Acraboz, sitagliptin. इसका सही आंसर होता है glibenclamide। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सल्फोनाइल यूरिया increases insulin release and can cause hypoglycemia. Question number 5. Which insulin has the fastest onset of action? Regular insulin, insulin lispro, NPH insulin, insulin glargine. इसका सही आंसर होता है इंसुलिन लिस्प्रो। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। लिस्प्रो इज ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 6. Which insulin is long acting? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लार्जिन, रेगुलर इंसुलिन। इसका सही आंसर होता है ग्लार्जिन। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। Insulin glargine provides a prolonged basal insulin effect. Question number 7. Which drug inhibits intestinal alpha-glucoside enzymes? Pioglitazone, Acraboz, sitagliptin, rapaglinide. इसका सही आंसर होता है Acraboz. Acraboz delays carbohydrate absorption, reducing postprandial glucose. Question number 8. Which drug class increases urinary glucose excretion? Sulfonylurea, SGLT2 inhibitor, DPP-4 inhibitors, biguanides. इसका सही आंसर होता है SGLT2 inhibitors. एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। These drugs block glucose reabsorption in the kidneys. Question number 9. Empagliflozin belongs to which class? DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, sulfonylurea and biguanides. इसका सही आंसर होता है SGLT2 inhibitor. Empagliflozin promotes urinary glucose excretion. Question number 10. Which DPP-4 inhibitor is commonly used? Sitagliptin,
पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लामाइड। तो सही आंसर होता है सीटाग्लिप्टिन। सीटाग्लिप्टिन प्रोलॉन्ग्स incretin activity and increases insulin secretion. Question number 11. Pioglitazone belongs to sulfonyl urea, thiazolidinone, biguanides, meglitinides, thioglitazolidine. It improves insulin sensitivity by activating PPAR gamma receptors. Question number 12. Major adverse effect of pioglitazone is hearing loss, fluid retention, dry cough, constipation. इसका सही आंसर होता है fluid retention. It may worsen heart failure due to edema. Question number 13. Which drug is contraindicated in severe renal failure? Metformin, acrabuz, sitagliptin, pioglitazone. इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इन सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच हार्मोन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज? ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एड्रेनालिन। इंसुलिन। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू। Question number 15. Which insulin is intermediate acting? NPH insulin, lispro, glargine, aspart. इसका सही आंसर होता है NPH insulin. NPH insulin has an intermediate duration of action. Which drug may cause lactic acidosis? Metformin, glimepiride, sitagliptin, acrabuz and metformin. इसका सही आंसर होता है metformin. Metformin lactic acidosis is a rare but serious adverse effect होता है मेटफॉर्मिन का। क्वेश्चन नंबर 17. Which anti-diabetic drug commonly causes weight gain? Glibenclamide, metformin, empagliflozin, acrabuz. इसका सही आंसर होता है ग्लिबेनक्लामाइड। सल्फोनाइल यूरिया में कॉज बोथ वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। Question number 18. Which drug is useful in reducing postprandial hypoglycemia? Acrabuz, glargine, metformin, pioglitazone. Acrabuz is the answer of this question. It delays carbohydrate digestion and absorption. Question number 19. Which drug is preferred in obese patients with type 2 diabetes? Metformin, glibenclamide, पायोग्लिटाजोन, एनपीएच, इंसुलिन। इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इट इज वेट नेचुरल और मे प्रोमोट मॉडेस्ट वेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 20. HbA1c reflects average blood glucose over approximately 1 week, 1 month, 2 to 3 months, D 1 year. इसका सही आंसर होता है 2 to 3 months. HbA1c reflects long-term glycemic control over the lifespan of red blood cells. Question number 21. Which oral anti-diabetic drug should be taken with meals to reduce gastrointestinal side effects? Metformin, glimepiride, sitagliptin, empagliflozin. इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन। Taking metformin with food reduces nausea, diarrhea and abdominal discomfort. Which sulfonyl urea has the longest duration of action? Tolbutamide, glibenclamide, gliclazide, glipizide. इसका सही आंसर होता है glibenclamide. Glibenclamide is long acting and has a higher risk of hypoglycemia. Rapaglinide belongs to which class? Biguanide, metformin, biguanide, meglitinide, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor. इसका सही आंसर होता है meglitinide. Meglitinide stimulates rapid insulin release and are taken before meals.
Question number 24. Which drug is associated with genital fungal infections? Metformin, empagliflozin, sitagliptin, acrabose. का सही आंसर होता है empagliflozin. SGLT2 inhibitors increase urinary glucose, predisposing to genital infections. Question number 25. Which insulin can be administered intravenously in diabetic कीटोएसिडोसिस, जिसको बोलते हैं डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? ग्लार्गिन, लिस्प्रो, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन? रेगुलर इंसुलिन. IV regular insulin is the standard treatment for DK. Question number 26. Which oral anti-diabetic drugs should not be used in type 1 diabetes? Metformin, sulfonylurea, pioglitazone and all of the above. इसका सही आंसर होता है all of the above. Type 1 diabetes requires insulin because of absolute insulin deficiency. इसमें मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलयूरिया, पायोग्लिटाजोन सभी को यूजफुल होता है. Question number 27. Which DPP4 inhibitor is commonly prescribed once daily? Sitagliptin, Voglibose, Glibenclamide, Acrabose. इसका सही आंसर होता है Sitagliptin. Sitagliptin improves incretin activity and is usually given once daily. The main action of metformin is to increase insulin secretion, decrease hepatic glucose production, increase glucagon secretion, delay insulin degradation. इसका सही आंसर होता है डिक्रीज हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन. एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं. मेटफॉर्मिन प्राइमरीली सप्रेसेस लिवर ग्लूकोज आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 29. Which drug improves insulin sensitivity by activating PPAR gamma receptors? Pioglitazone, glimepiride, sitagliptin, paraglitazone. का सही आंसर होता है पायोग्लिटाजोन. पायोग्लिटाजोन इज ए thiazolidinol. Which anti-diabetic drug commonly causes flatulence? Acrabose, glimepiride, insulin glargine, sitagliptin. इसका सही आंसर होता है acrabose. Fermentation of undigested carbohydrates causes gas and bloating. Which insulin has no pronounced peak? NPH insulin, glargine, regular insulin and lispro. Glargine. Glargine provides a steady basal insulin level. Question number 32. Sulfonylureas act by closing calcium channels, potassium, KATP channels, ketoacidosis transphosphate channels, सोडियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स. इसका सही आंसर होता है पोटेशियम कीटोएसिडेस ट्रांस पोटेशियम चैनल्स. क्लोजर ऑफ कीटोएसिडोसिस ट्रांस पोटेशियम चैनल्स depolarized beta cells triggering insulin releases. Question number 33. Which SGLT2 inhibitor has proven cardiovascular benefit? Empagliflozin, tolbutamide, pioglitazone, clopropamide. Empagliflozin, it reduces cardiovascular death in many patients with type 2 diabetes mellitus. Question number 34. Which insulin should never be mixed with other insulins? Regular insulin, glargine, NPH insulin and lispro. ये ग्लार्गिन होता है जो किसी से भी मिक्सिंग नहीं हो सकता. मिक्सिंग alters its prolonged release characteristics. Question number 35. Which drug delays gastric emptying and promotes weight loss? Liraglutide, glibenclamide, metformin, acrabose. Liraglutide is a GLP-1 receptor agonist.
Which class has the lowest risk of hypoglycemia when used alone? Metformin, sulfonylurea, insulin, मेग्लिटिनाइड्स. मेटफॉर्मिन. इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन. It does not directly stimulate insulin secretion. Which insulin is classified as rapid acting? Aspart, Empage, Glargine and Ditemir. Aspart. Aspart has a rapid onset and is given before meals. Which laboratory test is used to monitor long-term glucose control? Random blood sugar, fasting blood sugar, HbA1c and urine glucose. इसका सही आंसर होता है HbA1c. HbA1c reflects average glucose over the previous 2 to 3 months. Which oral antidiabetic drug is most likely to cause hypoglycemia? Metformin, Glimepiride, Acarbose and sitagliptin. Glimepiride. Sulfonylureas increases insulin secretion regardless of blood glucose level. Which of the following is a GLP-1 receptor agonist? Liraglutide, sitagliptin, metformin, empagliflozin. Liraglutide, GLP-1 receptor agonist, increases insulin secretion, suppresses glucagon, delay gastric emptying and often promote weight loss. तो ये था हमारे 14 MCQs रिगार्डिंग डायबिटिक ड्रग्स. और जो रेस्ट रह चुका है वो वाला मैं दूसरे पार्ट में पेश करूंगी. धन्यवाद आप सभी को. मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है. प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए. इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe please my channel. Thank you.